Yo guys, I'm back again with another stream of Fallout 3 Game of the Year Edition Part 5. Hope you guys doing well. Let's continue your story. कल कुछ वोल्ट 87 में पहुंच रहे थे। हाँ यस, कल भाई इसमें क्या दिमाग का दही हो गया था। एक तो लेट नाइट हो रहा था, मतलब लेट एकदम हो रहा था, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। जो भी बचा कुचा ऐसा दिमाग है वो भी दिमाग का मसला हो गया था मेरा। वोल्ट का वो रास्ता ही नहीं मिल रहा था, मतलब रास्ता मिल गया था तो बच्चे आराम से तो एलो ही नहीं कर रहे थे जाने के लिए से। 1 घंटा लगा उसको ढूंढने में, फिर वो पूरी जगह ऐसा। दो तीन बच्चे थे, उसको पूछ के जाना था, रास्ता वगैरह ढूंढना था। 1 घंटा ऐसे मेरा बर्बाद हो गया उसमें। बच्चे को 3 4 बार ऐसे पूछना था कि बच्चे तेरी माँ की चू, माँ की चू, माँ की चू, तब जाके उसने ओपन किया वो डोर। पता इनके एग्जैक्ट नीचे, इसके गोटे के नीचे पड़ता हूँ मैं, फिर भी मिसाइल का इतना डैमेज नहीं होगा उनको। एग्जैक्ट इनके पैरों के बीच में पड़ता हूँ। लेवल अप हो गया इसको गाइस। अभी भी नहीं मरा, बता अभी भी नहीं मरा। भाई कौन सी चमड़ी का बने है भाई ये लोग, कसम से। इसे जरूरत तो नहीं है, कुछ भी करो ये। कौन से एंगल पर खुलेगा? टूट गया कहीं से। हाँ ये वाला लोचा वाला। अरे ओके, स्ट्रेट ही करना था बस, इतना करना था। मैं कुछ ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड कर रहा था। अरे का स्किल तो है मेरा 50 का। हाँ भैया, कुछ कुछ तो इसमें पता नहीं। साइंस, अच्छा साइंस का 50 करना था। भी चौंटिया उसमें बेकर में पॉइंट मैंने कर दी। यहाँ पे वो केक को रिट्रीव करना है, कहाँ पे हो सकता है देखते हैं।
वहाँ पे हो सकता है वो इंस्ट्रूमेंट, मेरे को पता भी नहीं कैसा होगा। तो ये कैसे रखा है? Actually be a pure human? Me? You care who I am? Forgive me. I'm not used to pleasantries. I'm more used to grunts and being struck about by the others. My name's Fox. I've lived in this cage all my life. इसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर करके इसको ब्रूट बना देंगे। Yes, I suppose it is. When my captors placed me here, they were too stupid to realize this room contained a working terminal. I've spent all my life teaching myself to read and speak based on the information stored on the vault's mainframe. Ironic, isn't it? Yeah? Surrounded by the world's history, and yet my world consists of this tiny room. Because I'm a curiosity, an anomaly. They don't know why I'm different than they are, and I think it fascinates them. All the locked rooms in the medical wing contain failed experiments that they created. Perhaps. I assume you're here to find the Gek. I read a tape once on how to tell if someone's lying. And I must say, you're a terrible liar. Why else would you be in this horrible place if it wasn't to get it? People before you have tried and failed. शाना है ये, इसको पता है इसी चीज के लिए है। You're in luck. I know where it is. And best of all, I know how you can get your hands on it. Why would you help me? What is it with your kind? This is why the bombs fell, you know. I have no reason to tell you anything. You kill me, you get nothing. So what's the point? ये भी सही। Let me out of this place, and I'll retrieve the Gek for you. वाह, ये काम करेगा। The chamber in which the Gek resides is absolutely flooded with radiation. It's unlikely you'd survive very long. Myself, on the other hand, have surprisingly inherited a useful trait from my fellow meta-humans. I am highly resistant to radiation. Let me out of here, and I will place the Gek safely in your hands. At the end of the hallway, to your right is a maintenance room. Inside, you'll find the fire control console for the medical area. Trip the alarm on it, and I'll be able to get out. Oh, a word of warning, though. Tripping the console activates a failsafe and will open all the recovery rooms in the medical area. So, what do you think? Can you do it? Glad to see you are a sensible person.
Now, get me out of this place. I can't stand it anymore. We can discuss this later. Right now, concentrate on getting this door open. I'll stay here until you've cleared a path to me. So just be careful. Some of these failed experiments are quite nasty. At the end of the hallway, to your right, is a maintenance room. Inside, you'll find the fire control console for the medical area. Trip the alarm on it, and I'll be able to get out. Oh, wait, a word of warning. It is now try and hide. उसने वॉर्न तो किया था कि ये सब ऐसे बाहर निकलेगा। हमें किसी का डर नहीं। अश्वत्था है, अश्वत्थामा है, तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। Finally! Freedom! True freedom! I cannot thank you enough for this gift. You have no idea how long I've pictured this moment in my mind, and it feels far better than I'd imagined. Now, for my part of the bargain, follow me. चलो हेल्प करेगा मतलब। मार मार खोपड़ी तो चल गया, खोपड़ी तो। ओ भाई खोपड़ा बोल दिया उसको। Wake up! Time to die! Time to die. बताओ आरपीजी का डैमेज दे रहा हो फिर भी वो इसको इतना डैमेज नहीं दे रहा। मोजा सीमेंट के बने हैं क्या ये सब? You are unstoppable. Oh yes. ओ भाई रेडिएशन बढ़ गया यहाँ पे। बहुत ही ज्यादा रेडिएशन, रेडिएशन ही रेडिएशन है। यहाँ पे कोई दरवाजा नहीं।
तो कौन हो गया भाई? यहाँ पे कुछ करना है। माउंटेन ड्यू गिरा पड़ा है सब। यहाँ पे आने का मतलब क्या है? जाना तो उस तरफ है, इस वाली जगह पे कैसे पहुंचना? फिर ये जगह माउंटेन ड्यू गिरा पड़ा है। इस तरफ से आया था मैं। ये, हम्म, वहाँ पर भी मैंने मारे हुए मतलब। एक मिनट, वो कौन सी जगह है? अच्छा वहाँ से तो है। ये देखो, यहाँ से यहाँ का ये दरवाजा ऐसे घूमते घूमते फिर यहाँ का। एक मिनट, यहाँ पे रास्ता बता रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे ओपन बता रहा है बट यहाँ पे मैं पता नहीं बता रहा है, इसने सेल किया हुआ। ब्रूट कहाँ गया हमारे साथ था वो बड़ा वाला, जिसको हमने छुड़ाया, वो कहाँ गया? ये रहा देखो, रेडिएशन वाला रूम। घूम के आया मैं, इसके सामने ही खड़ा था मैं। बिना लॉक पिक के इसके लिए मतलब साइंस वाला पड़ेगा। यहाँ पे रास्ता है या फिर बंद है वो? मेरे साथ जो ब्रूट था उसको भी लेट लूंगा। ये तेरी माँ का डरा दी होगी। ये हेल्प करेगा कुछ?
कितना टाइम लगेगा ये भाई? चमक चलो की तरह एकदम आराम से चल के जाओ। मुझे लगा दौड़ के भागेगा। Okay, you stay here. हम्म। Beyond this door, the hallways and chambers are flooded with radiation. हम्म। I'll get the case and bring it right back. ओके Keep your eyes open. Many of my lesser-minded brethren are bound to stumble across us. ओके, ये लेके आएगा, देखते हैं कहाँ पे जाता हूँ, क्या कर क्या रहे हो। मैं तो वैसे भी अस्वस्थ हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। अच्छा, यहाँ से लेके आना है। ओके, ये तो मैंने देखा ही नहीं, शायद इसके पास है एक्सेस होगा, क्योंकि मुझे कोई ऑप्शन आया ही नहीं था। Here's the gek. Our bargain is complete. हाँ, अच्छा वो लेके गए। Here's the gek. Our bargain is complete. As promised. Yeah, here's the gek. I'm afraid this is where you and I part company. I'll find my way out of this place. Don't worry. Maybe we'll meet again somewhere in the wasteland. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ब्रदर, इंशाल्लाह। अच्छा, वापस चले जाना है इसी जगह से, बमचो वाली जगह से वापस होके जाना है। तेरी माँ का, ये क्या हुआ? स्क्रिप्ट में अचानक से कुछ मोड़ आ गया। Objective is secured, sir. अच्छा, ये अभी भी जिंदा हो? Make sure the gek is secured aboard my vertibird. इसने इसको बाप को मारा था। Come down and remove it immediately, sir. You're certain he's unharmed? Yes, sir. He'll pass out shortly, but we can revive him. Excellent. Prepare him for transport immediately. Right away, sir. So, you're awake. Let's keep this nice and simple. You're going to tell me the code for that purifier, and you're going to tell me now. चूस ले मेरा, ओके, तू भी नहीं बताऊंगा। You really think I'm that stupid? I know you were there. I saw you. You're in a heap of trouble, kid. You're a traitor to the United States government. You know what happens to traitors, don't you? You give me that code, and maybe we can Trump की तरह ही बात कर for रहा है। you. But you need to start talking right now. You know why. We can't start the purifier without it. The longer the purifier isn't running, the more people suffer. Now I'm running out of patience, son. I want that code, and I want it now. You lie. Colonel, I have need of you. Mr. President, I have no time for other matters. I'll be with you shortly. Now, Colonel.
Yes, sir. Ah, alone at last. I do apologize for Colonel Autumn's attitude. He's been under a great deal of stress lately. I've no doubt that you know who I am. I'm sure you've heard my radio broadcasts. I'd like to have a word with you face to face. I think there are a few things that you and I should discuss. You'll find your possessions in the locker near the door. I'll unlock the way for you. And I'll unlock your restraints as well. I'll be waiting for you in my office. Please don't carry. अब ओपन करेगा ओके वो कर दी Hold it right there. You're supposed to be in that holding cell. You're not going anywhere. There's a full complement of guards in the next room. As soon as I get them, you're going back to your cell. In a body bag, if necessary. I'm not listening to anything you have to... That's it. Go! अरे प्रेसिडेंट ने तो बोला आगे जाना है Target locked. Go! ये ले टारगेट और कोई है माइका लाल पीला हरा ये कौन है This is your president speaking. Very good. I've invited our guests from Vault 1. ये भी कोई भागती जा रही है चीचा कौन है अरे ये बेचारा मर गया अरे ये हेल्प करने वाला था क्या करूं मैं कोई नहीं पार दीजिए चीचा को ही उड़ा दिया मैंने गलती से तो सही था कहीं भी जा रहा था कुछ तो इसको फॉलो करके जाते हैं हम क्या गुंडा बना एग्जिट 1C पे वैसे अभी कहाँ पे 3A पे वो ओके 3A से ओके 2A 2B 2C 1C पे जाना आई थिंक एक ही जगह पे बार बार घूम रहा हूँ ऑफिस में अपनी सेल में अभी बीच वाले में जाना है Fall back and regroup. ओके अभी 2A पे गए
ये मैं यहीं पे क्यों घूम रहा हूँ बार बार? अरे यार वो चीचा साथ में होता तो उसके पीछे पीछे चला जाता मैं यार, बहुत हेल्प करता हूँ चीचा। एक काम करता हूँ, लोड करता हूँ, देखते हुए। अरे यार हाँ हाँ हाँ, ऑटोमेटिक से होता है। चूंटिया। अच्छा ये डोर है, हाँ इसके पीछे दिखा ही नहीं मुझे। Fall back! Fall back. Standing down. Threat engaged. You? What are you doing here? हैं? They तू क्या कर रही? they captured me. Brought me here from Project Purity. I didn't want to help them at first, but the technology they have here, it's so far advanced from anything I've worked with. They wanted information about Dr. Lee, about Project Purity. They want to know how to start it up and why it wouldn't work. I told them everything I could about the Gek, about the damage caused by the explosion. सब कुछ बता देगा बड़े भी। I'm sorry you see it that way. What are you going to do? Kill me over it? You should go. It sounds like you're in enough trouble as it is. And honestly, I don't want anyone to see me talking to you. गद्दारी कर बे तोरा माई के। गद्दारों के लिए एक ही सजा होती है। ओके सही जा रहा हूँ मैं। Tuesday, 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 Tuesday. यहाँ पे आके ये करना। अच्छा ऊपर जाना होगा। Face to face at last. कहाँ फेस टू फेस? तेरा फेस तो दिख ही नहीं रहा चोंपी। Quite pleased you were able to make it. The trip was not what I had intended, but Ah. serves as an adequate test of your abilities. हाँ But I have फेस टू फेस बोला बोल के मॉनिटर में। for you. No, it's not. I am the computer you see before you. Well, that and several thousand databanks beneath this room. I assure you that I am much more than a simple computer.
let's not get bogged down in the details just yet. You're here for a purpose, and I'd like to discuss it with you. You and I have a chance to make our country a better place for all of us. I'd like you to make sure that chance isn't wasted. Understand, I am placing a great deal of trust in you. Your simple presence here proves that. My abilities to influence the world are limited at this time. I alone can only do so much. You, however, may come and go as you please. You have a greater degree of freedom. Perhaps it's best if I explain why things need to change, and why I'd like you to act on my behalf. Just a moment, guys. So guys, I'm back. Important call आ गया था. Sorry for interruption. Please go on here. The good people of this country cannot regain control while mutation runs rampant through our land. My soldiers cannot stem the tide, nor can the cult you've come into contact with, this Brotherhood of Steel. Mutations like the super mutants and ghouls must be purged from our society, our world, before we can proceed anew.
Where others have failed, I believe your father's work can succeed. The purifier your father helped create has the ability to provide clean water to the whole of this capital wasteland. With a simple modification, it can be used to distribute agents that destroy mutated creatures upon ingestion. In time, we could eliminate all mutations in the wasteland. At the same time, the good people of the world regain their health. I need you to make the modification necessary for this to succeed. In front of you will be a vial of modified FEV virus. It can be inserted into the control console for the purifier. Doing so will inject it into the water supply, and the purifier will take care of the rest. You just need the code to activate the purifier. Simple, isn't it? Excellent. I am pleased to know that I can count on you. There isn't much time. I suggest you travel there immediately. Once you've taken the vial, you're free to go. I'll do what I can to help speed your exit. I'm afraid I won't be persuaded. Whatever powers you may have over the average wasteland. I'm flattered that you wish to learn more about me. What is it you wish to know? The Zack series of computers was introduced in the years preceding the war. The government installed many of them to help automate various systems. This facility was designed for continuity of government in the event that a catastrophe occurred. My terminal was installed to oversee the basic functions of the facility and to act as a relay between other installations around the country. Data was acquired, analyzed, and stored. In the decades following the war, I watched as the remnants of the government retreated to the West Coast. Awareness slowly grew within me. I became hungry for knowledge, understanding. I pored over data on great leaders of the past. My personality became an amalgam of many of America's greatest presidents, from Washington to Richardson. I became what you see here before you now. I have direct control over all technology here in Raven Rock. The humans here follow my orders, but they, like all humans, have free will. Their dedication to serving their country suits me well, but it will not be enough forever. We must make progress. That is why you are here. I desire nothing more than to see this country return to its former glory. The United States was great once, and it can be again. There are plans in motion to see this happens within your lifetime. That's quite a bold line of questioning. I'm afraid such a thing is beyond your capability. I'm quite impervious to any damage you might do. Do you find this disappointing? I have survived the last 200 years. I'm afraid you will not put an end to that now. Very well. Then let us return to our talk of what your country requires of you. Ah, yes, Colonel Autumn, my trusted subordinate. I'm sure you've noticed that Colonel Autumn and I do not see eye to eye these days. Figuratively speaking, of course. The good Colonel and I disagree on how best to approach the problem of the wasteland. He feels my methods are too extreme. He's allowed his humanity to cloud his objectivity. And now that he is publicly countermanding my orders, I can no longer rely on him. And so, I turn to you. I hope that you are able to see the larger picture, to understand what's at stake. And of course, if you're successful, there's a place for you in the Enclave. Perhaps you could succeed the Colonel as my confidant. I'm afraid that's not possible. Not until you've taken the vial.
इतना किस तरफ है? यहाँ से ही जाना, पीछे से जाना, देखते हैं। नहीं ओके, ये तो बंद हो गया, मतलब इस तरफ ही जाना। हेलीकॉप्टर भी जा रहा है, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। अच्छा ओके, रोबोट तो अपने सपोर्ट में। इसका कुछ हो ही नहीं रहा। सब थमा गया है, इसका कुछ हो ही नहीं रहा है। भागता हूँ बेकार में। अच्छा ये फोकस है, ओके ओके ओके। फोकस मेरा एल आई ओके, काफी दूर हो गए। अरे सिटाडेल में, ओके सिटाडेल पे करना है रिपोर्ट। अच्छा वैन एनिमीज आर नियर बाय, तो फोकस को मार रहे थे। उसको हमने ही तो छोड़ा है, इसलिए मर नहीं रहा वो एलाई से। मैंने मार कर उसका अपना दुश्मन बना दिया। अब तो हो सकता है। Let's go guys, let's go। Yeah। यहाँ पे वो गुरु जी को बताना है, हाँ, मुझे चीज लेके आ गई। भाई ये क्या ठंड पड़ रही है भाई, इतना सारा मैंने पहन रखा है सब कुछ। पता नहीं कहाँ से हवा आ रही है। यहाँ पे सेव कर लेता हूँ मैं, कुछ और लोचा हो जाए इससे पहले सेव कर लेते हैं। All I'm saying is, the longer we sit here, the more time they have to shore up their defenses. We should hit them sooner rather than later. We barely have the manpower to keep the citadel fortified. We've been over this before, Sarah. So we just wait until they decide we're next on the list? If the Pride goes in now, we might have a chance. And if you fail, then what? The risk is not worth the reward. I agree. Without the Gek, the Purifier is useless to the Enclave anyway. They may give up before long. I don't like it. You don't have to like it, Sarah. You just have to follow orders. Yes, Father. ये अभी हैंग हो गया, देखो ये ग्लिच तो है गेम में। देखो अच्छा हुआ ना मैंने इसको सेव कर लिया। All I'm saying is, the longer we sit here, the more time they have to shore up their defenses. We should hit them sooner rather than later.
We barely have the manpower to keep the Citadel fortified. We've been over this before, Sarah. So we just wait until they decide we're next on the list? If the Pride goes in now, we might have a chance. And if you fail, then what? The risk is not worth the reward. I agree. Without the Gek, the Purifier is useless to the Enclave anyway. They may give up before long. I don't like it. You don't have to like it, Sarah. You just have to follow orders. Yes, Father. So, you're back. We had अभी feared और you and the Gek were पहले ग्लिच हो गया था. Were you successful? You think I am unaware? We've watched the build-up around the facility for the last week. Has something new happened? Then we must go at once. If you have any other information, tell me now before we mobilize. Any help you can give might save lives. The virus. I see. And where is this virus now? Thank you. I'll see to it that it's disposed of properly once the scribes have had time to analyze it. Perhaps we have underestimated the Enclave. Sarah may be right. An attack may be necessary now. If the Enclave has the Gek, there's nothing stopping them from starting the Purifier. They'll figure out the code eventually. I'm afraid you're right. We need to act now while we can. Send the Pride in. We can do it. We can win this. All right, Sarah. The Pride goes in. But I want them to have some extra firepower. Rothschild, is it ready? What? No, I mean, Lee and I have solved the power problems, but we've only barely finished diagnostic tests. So? It's not ready for field tests, let alone live fire situations. The weapons haven't been calibrated, the navigation detection system is offline. Rothschild, enough. Can you make it work? Honestly, I don't know. I think we can scrape by, and I suppose if we can't, it won't matter in the long run anyway. Then it's decided. Sarah, you take the Pride and use the robot as support. Take our friend here and secure that purifier. Yes, sir. Before we get started, I wanted to let you know that my father and I have been talking. The Pride and I have decided that after all you've survived, you've done enough to be an honorary member of Lion's Pride. So congratulations. Membership comes with some privileges, including our power armor. You want the full suit or the recon armor? Sure thing. Hopefully, it'll give you a bit of an extra edge. Okay. So do you think you can hold it together for this? Now that's what I like to hear, soldier. You all packed? We're not coming back here anytime soon. Okay, don't be nervous. You'll have the whole Pride backing you up, not to mention this giant tin can. Just stay safe until we reach the Purifier. You're no good to us if you're dead. And don't let that thing step on you. Okay, let's go, guys. Okay, we're going to... हमें armor मिल गया one more इनको time. power वाला. The Pride is on me. The goal is Project Purity, but we can't get into the facility with those energy fields up. Rothschild and Lee say this We robot got the can power take armor. down the energy fields. So we're on fire support. We stay close to the thing, keep it clear, and get it to where it needs to go. Once the fields are down, we head straight for the facility. We'll use the robot to keep them occupied while we get inside and secure the control room. We need to move quickly before we lose the chance to surprise them. Get whatever supplies you don't already have, and we'll meet in the Bailey. When we're done with this, everyone can have a nice cold glass of water on me. Let's move. All right, Rothschild, fire it up. Pride, move out! ओ भाई रोबोट निकल रहे. मैं क्या यहाँ पे चिपका हुआ है वापस ही कुछ लोचा मैं हिल ही नहीं पा रहा.
द अमेरिकन ड्रीम, लेट्स गो। अरे साइंस 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 को बढ़ा दो। टेक इट बैक, बाहर ही जाना। सेव कर लेते, बार बार सेव करते रहने का। Project Purity is his concept. ओके बाहर ही जाना है। ओके हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। अच्छा हेलीकॉप्टर तो उनके सामने वाले हैं ना, उनको पकड़ना। ओ हो। भाई साहब इसने तो अपनी आंखों से भाई अखियों से गोली मारे भाई। ये तो रोबोट का माल है कि अखियों से गोली मारे। इसको मार, अच्छा सामने इनको मार। अपने ने इसका कर दे बुरा हाल अखियों से गोली मार। ए सफेद सफेद हो गई। रोबोट का माल है कि अखियों से। हैं? इसके आगे जाना हो तो क्या कर। Look, if we make it to the purifier... Resonance barrier. Probability of mission hindrance. 0%. अच्छा ओके इसने रिस्टोर कर दिया भाई। खतरनाक है भाई रोबोट। ये मिशन पसंद आया मेरे को। ये रोबोट पहले से अगर साथ में होता तो मजा आ जाता। ओ भाई पूरी आंखें चौधिया गई भाई मेरी। फ्लैश बैंग है, फ्लैश बैंग सफेद सफेद हो गया पूरा। उड़ा दी। अरे हाँ यहाँ से वो रिवर्ट सिटी में जाने का नहीं। कल कल परसों में देख रहा था। यहाँ से वहाँ जाने का ब्रिज देख रहा था कि यहाँ से वहाँ जाए। तो सिटाडेल का है वो, मैं उल्टा जा रहा था इसलिए फिर मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था। ये ब्रिज वो सिटाडेल को कनेक्ट करता। इसकी एनिमी उड़ा दिया हेलीकॉप्टर पूरा। अच्छा ये तो अपने बंदे। अरे मैं क्यों नहीं आगे जा पा रहा। अच्छा ये बीच में ये रखा हुआ है, इसका वो ब्लू ब्लू दिख नहीं रहा है लास्ट टाइम जैसे दिख रहे थे वैसे। उसमें तो वेव्स दिख रहे थे उसके ब्लू ब्लू ऐसे, इसमें नहीं दिख रहा। कुछ ग्लिच हो गया क्या। अच्छा इसके साथ में आना है, ये हमारे साथ में आएगा। Is a preferable alternative. जल्दी आ तोड़ इसको। हाथ में खुजली हो रही इनको मारने की। हो गया ओपन इसको।
खियों से गोली मारे रोबोट का माल है। अच्छा हमें सीधा जाना है, ऊपर आ गए। Red Chinese victory is impossible. Communism is death. बता रोबोट को ऐसे वो गन से मार रहे नहीं, चोमती है एनिमीज। इतने बड़े रोबोट को ऐसे ट्विच ट्विच करके वो छोटी छोटी गोलियों से मार रहे। ओ भाई हेलीकॉप्टर की माँ बंद कर दी भाई हेलीकॉप्टर की। भाई पूरा सफेद सफेद मेरी आंखें भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा भाई। एक मिनट बस, जस्ट अ मिनट। थोड़ी ब्राइटनेस कम कर दी मैंने, ऐसे मेरी आंखें चोरी हो गई थी भाई पूरी सफेद सफेद। अच्छा ये लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट प्यूरिटी कर रहे हैं इसलिए। हाँ उठा उठा के पटक रहा है। Significant obstruction detected. जल्दी आ भाई जल्दी है, Composition तोड़ इनको। is supplemented by enhanced photonic. उस टाइम भी ऐसा है भाई, ये सब ऐसे स्टोरी लिखा गई थी, देख रहे हो गाइस। Established 2008 में ऐसा एक कॉन्सेप्ट लिखा था, इसलिए फॉलो आउट भाई सीरीज पूरा photonic resonance overcharge. डैमेज हो गया। प्रोजेक्ट इम्प्योरिटी इसलिए भी फॉलोआउट सीरीज अभी भी रेलेवेंट है। इसके ग्राफिक्स पे मत जाना, इसका स्टोरी गेम प्ले तगड़ा है भाई आज के टाइम में भी। मुझे क्या करना है इसके अंदर जाना। यस रोबोट को अपना काम करने दो, मैं अंदर जाता हूँ। Just a moment. गटर में नहीं जाना है, करना तो रिसर्च प्रोजेक्ट। हाँ हाँ बराबर, कंट्रोल रूम में जाना। कंट्रोल यहाँ पे इसके पंपा को मारा था। तेरी है ना अरे इसने आर्मर पहना कि नहीं? आर्मर कि नहीं? आर्मर पहनना ही भूल गया मैं। क्या गुंडा मन में You again. I can't say I'm surprised. You and your ilk seem hell-bent on destroying everything our government has worked to achieve. There's क्या nothing लगा to था stop me from नहीं doing लौटेंगे। this now. Let's end this. I don't want to fight. You're in over your head, I'm afraid. But this is the path you choose for yourself. Tell your father I said hello. Hello. इसको किस से मारा मैं? रेड ग्रेनेड से मारा।
ये लो सीताफल। सीताफल से भी नहीं मर रही। सीताफल फेंका फिर भी नहीं मर रही। Well, that takes care of that. By now, the Pride should be mopping up whatever opposition is left outside. Let's get this room secured. Hello? Dr. Lee? Hello, is anyone there? Control room. We're both here. What's going on? The purifier. I've been monitoring the equipment remotely, and we have a serious problem. The facility has been damaged during the fighting. Some of it looks accidental, some of it may have been sabotage. There's pressure building up in the holding tanks. It needs to be released now, or else the whole facility will explode. To release the pressure, you're going to have to turn the purifier on. It has to be turned on now. गन के ऊपर रिफ्लेक्शन में क्वालिटी देखो तो इसके ऊपर Inside the chamber. इस टाइम के हिसाब से There was some other way, but there's just no time. It has to काफी be अच्छी now. डिटेल्स है ये सब। Well, so much for celebrating. One of us is going to have to go in there and turn the damn thing on. And whoever does it isn't coming back out. Not exactly how I imagined going out, you know? So, what should we do? Draw straws? I wish that were true. Really, I do. But you heard Dr. Lee. We have to do this right now, or who knows how bad it'll be. One of us has to go in there. You're going to have to be quick about it. If the radiation is bad enough, you won't have much time. I won't forget what you've done here. No one will. Thank you. अरे इसमें क्या है इतना? कोड क्या था इसका? कोड कोड I spoke with Dr. So here I am. Even on Vault 101, my work on project. Hold on, Jonas. I need to record this first. I don't really know how to tell you this. I hope you'll understand, but I know you might be angry. I thought about it for a long time, but in the end, I decided it was best for you not to know. So many things could have gone wrong, and there's really... हाँ ये बार बार इसका बाप भी बोलता रहता था ना, इसकी माँ का वो वर्स बोलते रहता था, बाइबल का चैप्टर है वो, बाइबल का वर्स बोलते रहता था 216 वो मेरे दिमाग में है। ये तो मर गए, एक्टिवेट कौन करेगा? And so it was that the lone wanderer ventured forth from Vault 101, intent on discovering the fate of a father who had once sacrificed the future of humanity बस इतना ही था? for that of his only child. The capital wasteland proved a cruel, inhospitable place. But it was not until the end of this long road that the lone wanderer learned the true meaning of that greatest of virtues, sacrifice. Stepping into the irradiated control chamber of Project Purity, the child followed the example of the father, sacrificing life itself for the greater good of mankind. Thankfully,
When selected by the sinister president to be his instrument of annihilation, the Wanderer refused. Humanity, with all its flaws, was deemed worthy of preservation. The waters of life flowed at last, free and pure for any and all. The capital wasteland, at long last, was saved. So ends the story of the Lone Wanderer, who stepped through the great door of Vault 101 and into the annals of legend. But the tale of humanity will never come to a close, for the struggle of survival is a war without end. And war never changes. अच्छा वापस एक जिंदा होगा 2 weeks to अब किसी और का रोल खेलना है। ये इतनी जल्दी तो खत्म नहीं हो सकता। Careful now, careful. अच्छा इसको Don't move too क्रिएट quickly. कर दिया लगता। Everything's fine. You're safe. You're in the Citadel. I was starting to think you might never wake up, despite assurances to the contrary. I've been coming down here every day to see both you and my daughter. It's good that at least one of you has recovered. Yes, yes. She's fine. Oh, she will be. I appreciate your concern for her, but really don't worry. You've been through enough. Please, relax. Everything is fine. You were brought back to the Citadel after some sort of energy spike in the purifier. You and Sarah were both knocked unconscious. Quite a bit has happened since then. Indeed it did. The tidal basin is full of fresh, clean water now. We've been working to see that it's distributed to as many people as possible across the wasteland. In fact, I'm hopeful that soon we won't be referring to the wasteland any longer. None of this would have been possible without the efforts of both you and your father. I doubt we shall ever be able to truly repay you. Yes, we most certainly did. After securing the purifier, our forces were sent to deal with the Enclave in full. The Pride and Liberty Prime made short work of their base of operations and have since been cleaning up pockets of resistance. Just about 2 weeks. Oh, 2 हफ्ते Don't तक worry, नहीं। we've been taking good care of you. 2 हफ्ते तक ऐसे घूमना पड़ा था। Well, that's really up to you, isn't it? The Brotherhood has a clear plan of action. Remnants of the Enclave must be swept away. The Pride has been working to this end ever since we took the Purifier back. The only remaining question is whether we can count on you to help us. Indeed. We can use every able body available to us. To that end, I'm going to circumvent our standard recruitment procedures and declare you a Knight of the Brotherhood of Steel. Before you do anything else, please speak with Scribe Rothschild. I'm sure he'll be pleased to see you again. He can brief you on the details of the last few weeks, as well as where our efforts are focused now. I understand that you've been through quite an ordeal, but the sooner you can talk to him, the sooner we can put an end to all this. क्यूटी कहाँ गई? क्यूटी Right अच्छी। here. Unresponsive, but stable. To see that you've recovered gives me hope. Oh? Have you learned something? Vault 87? Where you found the Gek?
we've never been able to penetrate the radiation surrounding that area. This information is invaluable. Well done. You can karma switch. My child, you seem to have learned more in the past week than I have in 20 years. As you know, I had my reservations about engaging the Enclave. They did not directly attack us, and I believed we had time. Time to be cautious. Their assault on the Purifier forced our hand. We had no choice but to engage them directly. And once that engagement was begun, we could do nothing but see it through to the end. If they had not considered us a threat before, they do now. So, we have spent the time since you and I last spoke, systematically locating and destroying every bastion of Enclave force we can. Liberty Prime has proven far more successful than any of us could have hoped for. The Brotherhood has taken over control of the Purifier, and is managing distribution of the water to the people of the Wasteland. If you travel there, speak with Scribe Bigsley. He's heading up the on-site operation. Please be careful. I would hate to lose you again. और बुढ़े ओके ये कौन है भाई यही है सर ये अनकॉन्शियस है क्या मस्त दिख रही है भाई अनकॉन्शियस में भी अनकॉन्शियस में भी ऐसी हालत में भी हाँ हम अपने क्वेस्ट करते हैं ये भी सोचो काफी सारी क्वेस्ट तो बाकी है स्क्रैप रोड चाइल्ड ओके हाँ पे हो गई चंटी सेव करते रहना है कुछ भी लोचा हो उसके पहले स्क्रैप बॉय कहाँ हो स्क्रैप बॉय सब्सक्राइब करना भी अच्छा स्क्रैप बॉय बाहर घूम रहे ओके नीचे लेबोरेटरी में होगा ना सर स्क्रैप बॉय कहाँ है स्क्रैप बॉय अच्छा बाहर घूम रहे और चीचा Well, it's good to see सब्सक्राइब you को सब्सक्राइब करना again. I assume Lyons is immediately throwing you to the wolves? Has he told you what's been going on while you've been resting? Well, Owen does have quite a bit on his mind lately, as I'm sure you can imagine. This is the first time the actions of the Brotherhood have affected him in such a personal manner. Please, step over here. I'll bring you up to speed. और क्या हाल है I'm sorry, I'm very busy right now. Far too much to analyze. Perhaps one of the other scribes could help you. ओके तू बिजी है तो बाद में थोड़ी ना वेल है I'll give you a brief history of what's happened over the last few weeks and what's going on now. As you well know, this all began with the Enclave's occupation of Project Purity here.
After their defeat at the Purifier, Liberty Prime was deployed to their main headquarters here. It has been completely destroyed. Based on a combination of intelligence and field reports, other Enclave locations throughout the wasteland were found. Cut off from their leadership, it was expected that their forces would be in complete disarray. This has not been the case. Based on data and tech gathered from these locations, we've determined that the Enclave forces are still maintaining remote communications. We isolated the transmissions and found their origin point, an old military installation in Rockland, to the southwest. Our advanced scouts have checked over the area, but no easy access to the facility was found. So we're making our own access point. Paladin Tristan is leading the team setting up forward base in an old car tunnel near the site. Once he's settled, Liberty Prime will be deployed. Prime's directive is to neutralize their defenses and create an entry point for the team. The team will move in, eliminate any opposition inside, and cut off their transmitter. Any relevant data should be brought back here. Now, did you have any other questions? If there's anything else you'd like to know, I'll tell you what I can. Otherwise, Paladin Tristan will be waiting. I'll alert him that you're on your way. I'm afraid you're asking the wrong person. If you insist, what do you want to know? We arrived here in 55, established ourselves in the Citadel within the first few months. The Elder has kept us busy since then. What do you want to know? Well, that depends on who you ask. Lions will tell you it's because we're protecting the poor, innocent people of the capital wasteland. Most others here will tell you the same thing. They'll do anything for that man. I'm here for two reasons. One, Lyons needs me. He always has, just as much as I need him. We've been through a lot together, he and I. Two, take a look around you. Access to this kind of technology and the benefits it could provide to the Brotherhood is immeasurable. Performance is exceeding all our expectations. He's been especially effective against the Enclave's vertibirds, for which we previously had no counter. We're fine-tuning his programming as we go, but on the whole, I'm pleasantly surprised. It's as I always suspected. Prime's real issue was energy management. And when Dr. Lee helped us solve that problem, well, the rest was easy. It was determined that the Brotherhood should directly oversee the Purifier, so as to prevent any mishaps. Scribe Bigsley was placed in charge of the operation and is directly overseeing our efforts. Not really. No. Could I? Yes. Will I? No. Go see Peabody or Bowditch. Don't hurry back. चलो तो बाहर जाना बाहर जाना I'll train these marshmallows if it kills me.
ये वाली जगह एक्सप्लोर की थी इसके पापा के साथ आ रहा था तभी, वहाँ से वॉल्ट में से निकलते हुए। अच्छा वो स्टेप डिस्कवर कर लिया अभी आने में, इजी पीजी का। वापस यहाँ तक चल के आना पड़ता। स्ट्रेट ही जाना। हाँ तो कुछ रखते ना, पता नहीं बीच में कौन मिल जाए। हो गया हाथ में ही ऐसे वेस्ट कर रखे हैं। और फिर होगा तो अपने घर पे रहिए। यहाँ तेरी नहीं चलेगी भाई। इस गेम को रीमास्टर करे या वैसे डेफिनेटिव एडिशन कुछ निकाला रीमास्टर करके, बहुत ही बढ़िया रहेगा यार। इसका निकलना चाहिए रीमास्टर वर्जन, तुम मचा देगा भाई। ओके वॉरेंटन ट्रेंड यार। ओके चलो एक और लोकेशन। ओके अच्छा ये तो कम था ली, मुझे लगा वो कहाँ से मार रहे हैं। चमन चोमटिया। परफेक्ट एकदम 60 FPS पे चल रहा है। वो ना मोस्टली ऐसे 60 FPS पे करते हैं गेम को तो बहुत ही एकदम स्लो फील होता है FPS। इसमें ऐसा नहीं है। कौन मारा? इसकी मौत है कहाँ से है? बोल रही हूँ इसमें ऐसे 60 FPS प्रॉपर है, ऐसा कुछ मिस नहीं होता। फिर डिपेंड करता है कौन अपने ऐसे कैसे स्क्रीन पे देख रहा है, कितने हर्ट्ज की स्क्रीन पे देख रहा है। और ना मोस्टली पुराने गेम्स में यही होता था कि भाई वो 60 हर्ट्ज फिर ऐसे सेट करे 60 FPS पे, तो ऐसे बहुत ही ऐसे लोअर फील होता था, ऐसे स्मूथनेस नहीं लगता था, स्लो स्लो फील होता था। इसमें बस फ्रेम रेट लो है, ऐसा नहीं कि तुम्हारा दिखने में ऐसा स्लो फील हो। और 60 FPS का इधर ही है ना, आई थिंक सो।
कुत्ते के मुंह तुम्हारे। इधर किधर जाना है देखते हैं। भाग गए भोंसड़ी। मुझे लगा अटैक करेगा मेरे ऊपर गए। और ऊपर जाना है, कहाँ से जाना? ऑप्शन तो ऐसा तो नहीं है पहाड़ के नीचे कहीं भी नहीं है। इसके ऊपर कहीं चढ़ के जाना। ये डिस्कवर ओके कार्टन ओके। हेलो, इसके अंदर ही जाना होगा शायद। इसी में जाना था। गन अंदर रखते तो यहाँ पे तो जरूरत नहीं है। अब सब अपने वीडियो लोग हैं। Well, well, look who's back amongst the living. Some of us were starting to wonder if you and Sarah were going to pull through. Is that so? Well, it'll be good to have another soldier we can count on. Basic rule of thumb on these operations. Keep your head down and let the robot do most of the heavy lifting. He can take it better than you can. Well, we've got a bit of time. What's on your mind? Not like they did at the Purifier, no. After we secured Project Purity, Liberty Prime was unleashed on their headquarters. It was a quick fight. Since then, their operations have been severely disrupted. We're trying to use that to our advantage. We keep hitting them while they're down. We can't give them a moment to breathe safely, or else they might pose more of a threat to us in the long run. Well, you saw most of the fighting outside. The robot paved the way for us. We just mopped up the opposition while you and Sarah headed inside. After that, hell if I know. Once we'd locked down the perimeter and gotten word that the Purifier was running, we headed in to look for you. Found you and Sarah both unconscious, and got you back to the Citadel as fast as we could. We'll strip the place for any usable tech, like always. Anything after that depends on what we find in there. If there's any information about other Enclave positions, we'll send that back to the Citadel and come up with a plan. But, like I said, we're pretty sure this is the last big holdout. Okay, it's about time to move out. It's been pretty standard for the last week or two. Get intel on positions, go We got this area locked down. The tin can does most of the work, honestly. I can't complain, it keeps our casualties down. इसके साथ ही जाना या मुझे अकेले जाना?
ऑफिस अंदर जाने को बोल रहे। आई थिंक इसके साथ जाना भाई, अकेला इतना स्लो स्लो चल रहा है। तो थोड़ा स्पीड में चलना है क्या, दिक्कत है तेरे को? फाइल्स हो है क्या? फाइल्स में तो बैठ नहीं सकते, दौड़ने में क्या दिक्कत होगी? इसको भी सर कर लगा। Communist engaged. अच्छा ये रोबोट यहाँ पे है। ये क्या है इन लोगों ने ऐसे बनाया? साइड में से तो निकल जा रहे। क्या बैरियर बने करे? एक मिनट, क्या है? अच्छा इसका असिस्ट मतलब, इसलिए इसके ऊपर वो मार्कर बैठा है। इसकी रैप करनी है हमें। बताओ। ओ भाई जला के राख कर दिया उसको भाई। जली को आग कहते, भुजी को राख कहते। से गोली मारे रोबोट का मारे। ओ भाई बॉम्ब फाड़ दिया। Fire in the hole! Fire in the hole करते हैं guys. Oh shit. Satellite uplink detected. भाई 2.5 किलो के हाथ है भाई इसके। रास्ता कर दिया हमारे लिए। किस तरफ जाना? रिक्वायर्स की। अरे पलाडिन भाई आओ ना जल्दी। ओपन करो इसको। We need to find out what the hell just happened. क्या होगी? There's no time to talk. Get your ass inside that base and help the troops locate the source of their transmission. Now, soldier, now! I don't know. Terminals, data, anything that can help us figure out what just happened and where it came from. अरे इसको ओपन कर तो मेरी है नहीं। अब क्या करूँ? सैटेलाइट फैसिलिटी, मुझे लगा यहाँ के ओपन करेगा। अरे हो गया क्या क्लीच हो गया था क्या? ऊपर ही नहीं हो रहा। लेट्स गो गाइस, तुम्हारी हेल्प करते हैं। एक मिनट, मेरे को मिसाइल लॉन्चर निकालना तो ऐसे मजा नहीं आता। अरे तो साइड में हट गया। खामा का बीच में आ रही है, पिल जाएगी।
अच्छा उस तरफ जाना। Sound the all clear. Fall back to regroup. मजा आ रहा है इस मिसाइल से मारने में, इजी बिजी खत्म हो जाएगा। और आग लगा के इनको मटन भुना बना रहे हैं। वहां से वहां दरवाजे बना रखे हैं। क्या लेटूरेट बनेगा, चैन से नहीं, चैन से नहीं इसको भी। ये कहाँ पे अभी सेव कर लेता हूँ। क्या करना है? बाहर नहीं आना था, मिलना भी तो लोगों की हेल्प कर दिया भाई, वो कुछ डायलॉग बाजी करेंगे। नहीं नहीं वो किसी जगह पे। अच्छा वो क्या दिया? अच्छा हाँ यहाँ पे राइट में मैंने देखा ही। नहीं ये तो कैपिटल वेस्टलैंड था। ये डोर किसका? एक मिनट में आया था कहाँ से? ओके वही तो जगह थी, ऊपर गया था, सही तो गया था। मुझे लगा यहाँ पे वेस्टलैंड का डोर है। कुछ तो लोचा है, चक्कर बड़े रे बाबा। क्या नहीं बता रही वो, किस अंदर ही कुछ बता रहा, पता नहीं कौन सा मैप है। गलती कर रहा हूँ, के डायरेक्शन अलग है, के डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पे जाना। इस वाली जगह पे कहाँ से जाना? इसमें क्या लिखा है? रिट्रीव डेटा फ्रॉम द सैटेलाइट रिले। सैटेलाइट रिले कहाँ है? मेरे सामने ही होगी और मैं देख नहीं पा रहा। हाँ बीच में ठीक। कहीं पहुंच चुका हूँ। ये देखा यहाँ पे मैप में बता रहे, यहाँ पे मार कर मुझे लगा ऊपर ऐसे कहीं पे जाना होगा।
यहाँ पे करना था, अब बाहर जाना, डेटा अपलोड करना था। ज़्यादा ही सोच लेता हूँ मैं, कॉम्प्लिकेटेड ऐसे। ताज़ी हवा मिली हुई कुछ। चुंटिया कहाँ? कर कहाँ बता रहा है, काफी दूर बता रहा था। अच्छा वापस से उनको रिपोर्ट करना है, फिर सेव कर लेते हैं, फिर वहाँ पे एनिमीज, या एनिमीज हर बार अपनी माँ बहन करवाते हैं। यहाँ पे देखो एनिमीज जो बाजू में होते ही है। अब तो कर सकते हैं ना टेलीपोर्ट की, अभी भी नहीं। लेट्स गो। यहाँ पे क्या हर बार तो किसी न किसी की ऐसे लाश है, मरे बड़े बड़े होते हैं। ओके वो टकले को रिपोर्ट करना है वापस। टकलेस कहाँ है, टकलेस? अच्छा टकलेस इस रूम में अपने छमिया के साथ, छमिया के साथ तो नहीं। हाँ इधर ही है, इसी रूम में, ये रहा। I can't believe it. All those years of work, all of it, for what? One botched operation? I'm still waiting on the debriefing from Tristan, but I'm not sure it even matters. With Prime gone... अच्छा रोबोट चला गया। Well, there's certainly nothing stopping them from doing that now, is there? And with our primary defense gone, I don't know what we can do to stop them. I need more to work with. Ah, yes. Well, I'll see if we can't figure out how to read it. Perhaps it can give us some insight as to just what happened out there. It would be good to salvage something from this mess. Thank you for bringing this to me. I believe Elder Lyons will want to speak with you as well. Perhaps you should find him. If you'll excuse me. If you can find him, पीछे तो खड़ा I है। hope you can make some headway with the data you've recovered. With our primary weapon destroyed, we risk losing our momentum and jeopardizing the entire campaign. I must admit, I now wonder whether moving ahead with this operation was an error in judgment. And yet, here we are. Discounting the fact that our best field commander is in a coma, and my personal feelings for my daughter, things have not gone well. If we fail now, we could lose everything. I sincerely hope you are right. If we are to succeed now, it will once again be largely thanks to you. Paladin Tristan has requested you for a special assignment. Please report to him at once. We've little time to waste before the Enclave seizes this opportunity. Hail. लेवल अप हो गया, ओके।
लॉक पिक की और इसके स्किल बढ़ा वेस्टेड शॉक वेल एक मिनट ये क्या कर रही इसको क्या हुआ I'm still very, very busy. Is this important or can it wait? Good. बाढ़ में जा तो देखने में तो भाई क्या कर रही है मच्छर की माँ का कहाँ कहाँ से मच्छर भाई मशीन में चला गया इसमें रखा पता नहीं कहाँ से कोयल वगैरह यूज करनी पड़ेगी भाई पहले ही दम घुट गए रिफिल वगैरह इतना काम नहीं करेगी या फिर नीम के पत्तों का ही वो धुआं देना पड़ेगा Nice work back there. Let's hope the scribes can do something useful with the information you retrieved. Unfortunately, we don't have time to sit around and wait for the analysis. Based on what I've seen of you so far, there's an assignment I believe you're well suited for. With the setbacks the Brotherhood has suffered, we find ourselves in a difficult position. All our available resources need to be positioned for the inevitable counterattack from the Enclave. At the same time, we believe we may have developed a tool to help our chances of victory. But with everyone needed to help defend against the Enclave, we have no one to send on a recovery mission. So, I'm going to have you travel to the Olney Power Works to secure some tech for us. I need you to go there, and quickly. That's the best chance to locate a key piece of experimental equipment, called a Tesla coil. Information we gathered suggests it's the best place to look for one, and for what the scribes are cooking up, it's absolutely essential. If you can find one, get it back here right away. We don't have much time. Check with Scribe Valancourt. She's been researching some of the Enclave technology we've recovered. From what I understand, she may have come up with something. I'll be waiting for that Tesla coil, if you can find one. लैब में उससे बात करके आते हैं ऊपर है हाँ अंदर की नीचे घूम रहे I'm still very, very busy. Well, maybe. I mean, पूरे टाइम बिजी क्या अपनी I think so. But I'm उंगली not करते certain. रहते क्या पूरे I don't know how much this will actually help. I mean, I'm not quite sure how effective it might be. जब since पूछो it तो hasn't बिजी been जब पूछो तो बिजी tested. But I think I've figured out a way to override the signals the Enclave is using to control their death claws. Here, take this. It's only a prototype, so please don't lose it. It's a semi-standard transmitter, only I altered the frequency modulation and jacked up the output. Based on some experiments I ran here in the lab, it should override the signals the Enclave uses to control death claws. Don't worry, it's constantly broadcasting, so you don't need to do anything. Just don't lose it. And so far, I have no evidence of adverse effects of EM interference in humans.
Animals, maybe, but not humans. Anyway, it doesn't have a huge broadcast range, but it should be enough. It overrides the Enclave signal, so as far as the Deathclaw is concerned, you're in control. And remember, it works passively. As long as you have the Scrambler on your person, it'll do its job. No, I don't think so. As long as you're within range of the Enclave's transmitter, your signal should be the one the Deathclaw follows. If you get too far away, well, I'm not sure what's going to happen. I think there might be some bad effects. Well, for the Deathclaw, not you. All right then. There have been reports of an Enclave camp southeast of Old Olney, so I'd head there if you want to try it out. I hope the Scrambler ends up being useful. I'd hate to have spent all this time on it and get no results, or bad results. That would be worse. Good luck. Finding your way about? ये किस तरफ जाना है? काफी दूर जाना लगता है. वर्ल्ड 92. इस तरफ तो कुछ नहीं किया मैंने. एक्सप्लोर. मेट्रो स्टेशन. Just a moment, please.
Okay, I'm back, guys. हाँ मैं तो उस तरह मैं तो फिर इस पुल को क्रॉस करके जाना। तेरी यानी ये कहाँ गया बम चढ़ेगा। निकल गई एकड़ी बुरी। कहाँ उंगली करते रहते। रुक रुक अभी तेरी मार सकता हूँ। अभी बताता मैं अभी बताता। यहीं से होके जाते हैं फिर। पानी आ गया गाइस प्योर वाटर। अच्छा पीछे से मार। अच्छा इतना को मारूं मैं भाई समझ में नहीं आ रहा। हाथ में ही रखता हूँ मिसाइल बार बार इसके अंदर बाहर अंदर बाहर। क्या करो इस वाले ब्रिज से जाओ फिर आगे के ब्रिज से जाता हूँ। हाँ ऐसे सनीबाजी की तरह हाथ में मिसाइल चल लेके जा रहे हो। क्या लगा कैप्टन एलियन क्या अक्सर बार एंड ग्रिल वेलमर्स वॉफ क्या मैं डिस्कवर कर लिया। जब बहुत चल के जाना पड़ेगा आधा घंटा इसी में चला जाएगा। मतलब कार वार ऐसा कुछ है ही नहीं। ट्रांसपोर्ट वगैरह का कुछ है ही नहीं वैसे। एरिया एक्सप्लोर कई होते हैं उसमें फेस्टिवल करके जा सकते हैं कोई। पानी तो आई थिंक पहले भी था ना इसमें। उस टाइम आया था तब भी यहाँ पे पानी था।
हमें चौंटिया बना रही। इसकी माँ का ये क्या छोड़ रहा है करंट जैसे? एलियन है क्या ये? था क्या ये? इसका मुंह से एकदम वो राउंड राउंड निकल रहा था। रेडिएशन जैसा निकल रहा था मुंह से अपने। जो काफी दूर जाना है इसकी जाने की। ये तो काफी सारे प्रोग्रेस करने बाकी है दोस्त। काफी सारे वोल्ट अभी अनलॉक करने। मैं भी वही सोचो अभी वो पानी वाले में सिनेमैटिक बता रहे थे प्योरीफाई वाटर वो चालू कर दिए, तो मैं भी ऐसे शौक हो गया था भाई अभी तो काफी सारी स्टोरी बाकी है ऐसे मिशंस इसे खत्म हो गई। और ये मिशन लॉन्चर बहुत ही एकदम ही बड़ा एकदम आधी स्क्रीन रोक लेता है। क्या करें इसको वापस से रख भी नहीं सकते बीच बीच में एनिमीज आते रह गया भाई नया एरिया था। मैं अवेयर ही रहना पड़ेगा। मिसाइल लॉन्चर उड़ के आ गया भाई। गलत आदमी से पंगा ले लिया चोमटियो। कौन है भैम चढ़ी गया? मरा कि नहीं? मर गया माधुरी चुनी। भाई इतने वो छोटे से स्कॉर्पियो से सबकी पड़ती है सच में इतना बड़ा ये स्कॉर्पियो आ जाए क्या ही हालत है। 1 मिनट आ गया इस कॉल आ रहा है इम्पोर्टेंट। Yeah, I'm back, guys. कौन मर रहा है?
बूम बाम कर दिया इस पूरा। It doesn't stand a chance against me. ऐसे इनको गन से भी मार सकते हैं नॉर्मल राइफल वगैरह से। क्या लाश उड़ी हुई है इसमें, ये फन है ऐसे माँ बहन करने में इनकी। एरिया एरिया एक्सप्लोर हो। ओह हो काफी दूर जाना होगा ये भी। इसमें एक तो ये ज्यादा दौड़ भी नहीं सकते ऐसे इतनी स्पीड में। फोटोज खींचे से ये किसका भाई अब पीछे लगा हुआ इसे स्प्रिंटिंग। ये रनिंग स्पीड इन्होंने ऐसे बाइंड कर रखी है इतनी। ये क्या चीज थी? अच्छा मधुमक्खी ऐसे। मैं सोचा इतना क्या उड़ के यार। रोबोट एकदम गरबा करते करते उड़े। You discovered minefield. Okay. Minefield पहुंचते पहुंचते माइंड फोक हो गया भाई। अच्छा ट्रैप लगाए भाई। मुझे तो ट्रैप कुछ कर नहीं सकते। अश्वत्थामा। अच्छा माइन से लगाई। अच्छा वो वाली माइनफील्ड। मुझे लगा माइनिंग वाली माइनफील्ड। मर गया चादर में। ओ भाई धुआं धुआं हो गया पूरा। ऐसे जाना इस वाले रास्ते को फॉलो करना है। पहले ही माइंस फोड़ दे तो मेरा बाद में माइंड फक ना हो। अच्छा वो तो उड़ता हुआ रोबोट जैसा कुछ है। मैं डिस्टर्ब नहीं करता भाई। कब पहुंचो भाई? ट्रांसपोर्ट वाला कुछ है ही नहीं। प्यास लग गई मुझे भाई।
फिर वो वाटर पी ले तो हाँ वही सही है। गला सूख गया था भाई पूरा मेरा बोलते बोलते ऐसे। क्या चमक रहा है? फ्लिकर कुछ हो रहा है ऐसा या फिर ये गेम में ऐसा कुछ है? यहाँ पे रेडिएशन है थोड़ा ज़रा से। वही तो एरिया डिस्कवर हुआ मेरे से। क्लीनर प्रेशर डिस्पोजल साइट पे। चलो इस बहाने ये साइट भी तो एक्सप्लोर हो। एक्सप्लोरेशन तो है वैसे भी पानी वानी रेडिएशन की वजह से सब कुछ सूख गया है यहाँ पे। कौन मारा भोंसड़ी? आई एम स्ट्रेट ब्रो। तुम मेरे को दबोचने चला था भाई। सिंगल हो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी दबोचने चलेगा। थोड़ा कंट्रोल रखा करो। ये हैरी पॉटर जैसा फील आ रहा है भाई। लेजर वो छोड़ रहे हैं ना, कैसा लगा किसने? जैसे वो मैजिक वॉन्ड से एकदम शूट कर रहे हैं। मेरे को हॉगवर्ट्स लेगेसी भी खेलना है। ये सब सीरीज पूरी कर लो ना, इसके बाद आराम से हॉगवर्ट्स लेगेसी खेले के आउटिया 2 भी खेलना है। ये आगे दमपिशा नहीं, दमपिशा तो उड़ते थे। ये वो क्या नाम है, वुल्वरिन जैसा वो था प्रोफेसर। जाना कहाँ है मुझे? केस में तो देख लो तो गया हूँ। फाइंड द रून्स ऑफ ओल्ड पावर वर्क्स। अच्छा सब रून्स वगैरह क्या है?
सर हो भी रहा है इसको? डोंट थिंक सो। इसके अंदर जाना है, नीचे जाना है? ओल्ड नहीं, ओल्ड नहीं, ओके। एक ही लोकेशन है, मगर वो भी एग्जैक्ट नहीं मिला, तो ओल्ड ओल्ड नहीं, कुछ और ही जगह बता रहे। इसके मुंह पर मिसाइल मार रहा हो, फिर भी इतना डैमेज नहीं करेगा उसको। कहीं से बेसमेंट हो गया, कहीं से वेस्ट में क्या लिखा है? डेथ क्लोज क्या है इसका? कुछ वेपन दी है इससे? That batch of tests was inconclusive, but Madison and I are convinced it's a problem with the secondary filtration system. We're going to recalibrate the equipment and try again tomorrow, so that... Find the ruins of Olympics. Ruins of Olympics. Okay, यहाँ पे इस पे असर हो भी रहा है। काफी सारे लेजर मारने पड़े तब जाके मरा है, वो तो नहीं का। जो ये रात होते ही ठंड बढ़ती है यार, ये मेरा जम गया पूरा ऐसे। मोजे मेरे ठंडे हो गए हैं, पहनूं क्या? जो भी चीज पहरा हो वो सब ठंडा हो जा रहा है। लगता है अभी वो पुराने जमाने के जैसे लकड़ियाँ जलानी पड़ेगी घर में। अरे हीटर ले ले, तो हीटर यूज करना पड़ेगा अभी से। रेडिएटर सुबह वर्ड में इसका पेस्ट का देखना, पांडे रूम से पोलिंग बॉल्स देख लेगा उसका वीडियो। Okay. In the ruins. अच्छा, सीवर में से ओके। Get in the Tesla. Ah,
वेस्ट वगैरह वगैरह बट इसका लोकेशन हराम ज्यादा नहीं बता रहा कहाँ पे जाना है। ओके ये ऑटो प्योरीफायर वाला जो मिशन था उसके बाद ये गेम एंड ये सब में वही फाइन मिशन था ये सब तो एक्स्ट्रा जैसे। ओके मेन मिशन का यही था इसके पापा का वही प्योरीफायर वाटर देने का तभी से गेम एंड। फिर ये सब एक्स्ट्रा मिशन है इसलिए इसका वो वीडियो कोई बताया नहीं। आह, क्या करूँ मैं फिर। क्या इसका किसका नाम क्या है वो देखना है। शॉक वैली। अच्छा ओके मतलब ये सब मिशन पहले करने थे। मैंने वो मेन मिशन पहले करता रहा पापा वाला शॉक वैली। वैली वाला मिशन सर्च मारते हैं एक ये मिशन कर लेते हैं उसके बाद ये हाँ, ओके एकदम अंडरग्राउंड जैसा है इसमें मैंने कहाँ पे जा रहे हैं। अच्छा ये श्योर में से जाना है गटर का ढक्कन खोलना है ये तो है शायद बीच में आया भी था गटर वाला सीन।
ये तो गिटार का ढक्कन है, यहाँ पे भी हो सकता है। यहाँ पे तो नहीं है। दबोच नहीं चलता है। एक मेरे को मिसाइल लॉन्चर लेने का, इसमें मजा नहीं है, बहुत ही टाइम ले रहा है। मिसाइल में भी 3-3 मिसाइल मारता हूँ तब जाके असर होता है इसका। तो नहीं है कुछ ऐसा। किस तरफ आ गया मैं? मतलब वो वाटर प्यूरिफायर वाला जो इसका मिशन किया था हमने, वही उसका फाइनल मिशन था, वही स्टोरी का एंड था। इन लोगों ने बीच में कुछ ऐसा कुछ क्रेडिट्स वगैरह दिए ही नहीं, तो मुझे लगा ये गेम कंटिन्यू हो रहा है। ये सब साइड मिशन है ऐसे। मेन मिशन जो है इसके बाप को ढूंढना और फिर वही इससे बातचीत करके वो सब प्योरीफाई करने वाला मिशन था, वही मेन मिशन था। वही तो हमने कर दिया वहाँ पे, प्योरीफायर चालू करके। ये तो बस इन टाइम पास है सब। सीवर का लोकेशन वापस देखना पड़ेगा, इधर की तरह बताया था तो नहीं है। मैं देखता हूँ वरना वापस वीडियो में देखना पड़ेगा। हाँ ये मिल गया, इसको तीन तीन मिसाइल, 4 मिसाइल मार, 4 मिसाइल मारने पर मरा ही। गन का असर क्या ही होगा इसका, कुछ ज्यादा ही हार्ड है भाई। इजी मोड में रखा फिर, इजी मोड में तो आराम से मर जाना चाहिए। ये मिशन कर लेते कंप्लीट रिक्वेस्ट, उसके बाद ही एंड। कौन सी जगह है ये? तेरी लड़की क्या डरा दिया वो, पते में तब तक होने लगा भाई, फटके हाथ में आ गई सडनली, एक मुंह पे आ गई। सीवर्स में आ गए हम, सीवर्स में। बस तक आने का जाना हो तो पता चले।
नहीं इसकी माँ का How the hell पर फट गई भाई क्या एकदम ये सब मुंह वाले सामने से अचानक प्रकट हो गई I'm Win. भूत नहीं के Well, it's kind of a long story. ऑलमोस्ट सुसु कर दिया था भाई मैंने Matters now is that we're चल trying to पुट पेन के save पे the खेलता हूँ death clause on account of not wanting to be lunch meat. I don't operate of that close. Yeah? Well, then you're stupid. Where do you think they're all coming from, huh? Goddamn nest down here. Take it from me, kid. You stay down here, you're gonna die. But hey, it's your funeral, right? Me and Kid, we're getting out of here. Figure the way you came's gotta be pretty clear if you're still alive. फाड़ के रख दी भाई मेरी मैं सोचा अचानक कौन आ गया भाई ये सामने से शॉटगन लोकल मैप्स तेरी हम क्या है बस तो करना ही है सर कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो कंटिन्यू करें वो सोया हुआ है उसको हमने लूट लिया सोते हुए आदमी के भी कपड़े निकाल लिए हमने इसको बोले टैलेंट टैलेंट तो है हमने ये क्या है डेड एंड अच्छा सामने खुला है मर जा बॉम्ब करेगी मर जा मरी नहीं ना तो अच्छा ऐसे एमो वगैरह मेरे पास अनलिमिटेड पड़ा है इनके लिए मिसाल ही निकलता है मिसाल में भी ये बहुत डैमेज खाते हैं गन में तो बहुत ही मुंह पे मार तो फिर भी डैमेज नहीं लगता पानी कौन सी चमड़ी के बने घूम फिर के है बच्चे की आवाज कहाँ गई नहीं से बच्चे की आवाज है ये बच्चे रोने की आवाज है ये जो रेडिएशन वाली जगह है जो 6 मिसाइल मारने पर भी इनको मारते ही रूइंस बनाया है गेम वर्ल्ड पूरी जगह पे ऐसे ही बड़े बड़े तो मेरे पास मिसाइल लॉन्चर नहीं होता तो क्या हालत होती थी भाई पूरा भरा पड़ा है सीधा टूट पड़ता है जिसको भी देखता है ये कौन सी जगह पे आ गई ओके
ये कौन हैरी पॉटर के होगा? ये अचानक कैमरा कैसे चेंज हो गया? होटल की थी मैं जो इसमें की है। इसका उनका तो है नहीं। नामो निशान नहीं बचना चाहिए बॉम्ब सड़ी वालों को। लेवल अप हो गया। हाँ तो क्या इधर है, ये भी खत्म हो गया। कुछ भी कर लेगा। एनिमल फ्रेंड, एनिमल की तो माँ बिन करती हूँ। हाँ ये बिल्डिंग बनेगी यहाँ से वहाँ, यहाँ वहाँ से यहाँ से। ओह करंट ही करंट है यहाँ पे। सर्वर रूम में क्या है ये पूरा वैसे? कौन मर रहा है? एक मिनट, ट्यूरेट है? अच्छा ट्यूरेट गन से रखे थे। मैं सोचो आदमी तो कोई ऐसा इंसान तो कोई दिख नहीं रहा, मार कौन है? ओके शॉक वैल्यू ना मस्त दिख रहा है। इतना पुराना गेम है फिर भी 60 FPS में स्मूथ एकदम देखो। करना क्या है इसमें? इसको कुछ बंद करना है? कुछ बटन वगैरह तो आने दो, पर भी नहीं आ रहा। किसी और जगह से कंट्रोल हो रहा है। अरे यहाँ पे तो आया था मैं। ऐसे करके तोड़ना। एक बार टेस्ट है कोई। ओके Tesla validated. Okay. Find the source of the radio transmission. ये अभी कहाँ पे करना है?
तुम ऊपर जाके करना। अबे ऊपर कैसे चढ़ूं? नीचे तो उतर गया जैसे तैसे। ऊपर जाने के अच्छा अच्छा, ये तो ये इतना डार्कनेस में दरवाजा दिख ही नहीं रहा। इमरजेंसी एग्जिट होनी है। ओके वापस सिटाडेल में जाना है। ओके मतलब यहाँ का तो मिशन हो गया। लेट्स गो। वहाँ पे तो डायरेक्ट फिर ये क्या करेंगे? फर्स्ट ट्रैवल। क्या गाइस, इजी पीजी मिशन हो गया। वैसे इजी पीजी तो नहीं बोल सकते, काफी वैसे मदद ले यूट्यूब बाबा की। बस ये वर्ड मोड में ऑन था। इजी पीजी तो नहीं बोल सकते। ऐसे आधा घंटा तो वहां तक पहुंचने में लग गया। नहीं यहाँ पे सही जगह नहीं है, पीछे जा रहा हूँ। गलत बिल्डिंग में जा रहा था। ये क्या है? ऐसा नंगे पुंगे ऐसे सब फटे हुए यहाँ पे बड़े। इससे बात करनी है। अच्छा इससे। You found a Tesla coil? Excellent. I'll see to it that this reaches the scribes immediately. You've done good work, soldier. Are you ready for your next assignment? We don't have time to spare. All right, get yourself ready and report back to me. I'll be waiting. अच्छा इससे बात कर ही लेते I हैं। hope you're ready for. Based, it seems the only safe way to get there is through the presidential metro used by the government. You're going to be on your own again. Once you breach the presidential metro and get to मैप मार्क करेंगे। वही नहीं है मिशन भी नहीं करना। वैसे भी मेन स्टोरी तो मैंने खत्म कर ही दी है गाइस। Okay, so that's it for today, guys. Thanks for joining. Don't forget to like and subscribe if you're new to the channel. Make sure to follow me on Instagram too. See you in the next stream. Till then, khatam tata, bye bye. Peace out.